हाय गाइस। आज हम लोग बहुत ही इनफेमस जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में वो डिस्कस करेंगे, हिंदू वर्सेस हंसराज। एज द आंसर इज टू मोस्ट अदर डाउट्स, द आंसर इज इट डिपेंड्स। अब ये क्या चीजों पर डिपेंड करता है आज हम लोग वो देखने वाले हैं। बिकॉज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी के लिए हिंदू बेस्ट फिट होगा, किसी के लिए हंसराज। बट कौन सा किसके लिए क्या बेटर होगा उस पर बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। सो वील हैव अ डिस्कशन अराउंड दैट। वी हैव देवेश फ्रॉम हिंदू। ही इज क्वाइट गुड एट कंसल्टिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी डी शॉमेस ने इंटर्न करा था एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है। सो वी ऑल्सो हैव रिया फ्रॉम हंसराज। शी इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव, बहुत टैलेंटेड एंड मैं एक बार गया था, कुछ स्टार्ट राइट करके समिट था वेर आई मेट रिया एंड इट्स बिन अमेजिंग नोइंग हर। सो वील गेट टू नो हिंदू हंसराज का कल्चर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स फ्रॉम देम। सो चलो फिर टू स्टार्ट विद देवेश, हाउ अबाउट आप हिंदू के बारे में बताओ, कल्चर कैसा था एंड आपको कैसा लगा हिंदू आके एक्सेट्रा। Hi Ayushmaan, thank you for the warm introduction. In terms of Hindu's culture, I would like to start with, as a commerce student, I think even my aim at the beginning was srcc, but Hindu happened, and I am honestly like, I wouldn't want it to go any other way if I look back at this point of time. So in terms of culture, it's amazing. Like the people here, it has the right amount of competition with the right amount of inclusivity and like helping each other. So I'm actually pursuing economics honors right now, and even my first preference was Bcom Honors, but then I had good score in mathematics, and eventually I learned that Eco Honors is a much more course for me than Bcom Honors would have been, because eventually it's a technical course, and some of the faculties that we have are amazing. In terms of culture, it's a wonderful college. Like it's very inclusive. दैट्स ग्रेट। देवेश, इट वाज अमेजिंग नोइंग अबाउट हिंदू, राइट? चलो रिया, हाउ अबाउट हंसराज, आप थोड़ा बता दो प्लीज। So hello everyone, doing my Bcom honors from Hansraj. The culture at Hansraj generally is amazing. Like you enter the college and the culture is like really vibrant. Unless it's the time like there's some holidays or everything, you always find a crowd at Hansraj. Like always, it's that true. You have if you have seen that band Baja Barat wali movie, it's that true culture. You see that thoda movie type culture here. So personally, it's very vibrant, and Hansraj was never on the map for me, but it happened, and I would say the same as Devesh said, that I wish that like now I don't even see srcc, so I'm satisfied where I am. So the culture, apart from being vibrant, it's also very inclusive. So we have like specialty special ability cells, etc. We have societies that promote uh, differently abled people, and also we have that tactile path. Newly we have like if you see, like for example, there's a classroom A109, so it's the ninth classroom on the first floor. So where the A109 is written, you'll also find A109 written in braille. And then you have lifts, etc. You actually see people in the libraries, in the admin office, who are specially able. And then you have like, I have not seen this normalized culture of like specially able people anywhere else, and it like feels so good to be here. Yeah, that would be it. That's really amazing, यार. So I'm glad, Riya, that you mentioned about societies, right? Because societies तो बहुत ज्यादा एक कॉलेज लाइफ के एक स्टूडेंट के लिए कॉलेज लाइफ में हाईलाइट होती है, right? So since you guys have both been a part of a lot of societies, so let's discuss about that as well. So Devesh, how about you get started, especially considering that you are the vice president at HCG? Okay, so firstly, like I'm serving as a vice president right now at Hindu Consulting Group. And when I entered college, the society hype was the first thing that you get to see. Like each and every society coming on, doing their orientations, and you're just very confused at that point of time, and like everyone would be when they enter college. So, like going out to that same vibe and where everyone was going, I think I participated in that, and in my first year, I was part of the placement cell, FIC, LCG, and in actors, and I think the research vertical of my department. Like all of these went very smoothly, and I would say that societies are one of the best source of learning that you can get. Like there are two things when you are a commerce student and you enter a college. Technical skills are something that you are a lot like you get a lot less worse than someone compared in a science college, and that copes up because of these societies. Like they provide you a culture where you lead people, where you organize events, where you do different kinds of stuff. You write research papers. Although there are a lot of monotonous stuff too,
like for the reality of things. But eventually, it's a great learning experience, and it has been for me. It has helped me uh, improve my personality overall. I think that is the reason I'm able to do a lot of stuff during college and will continue to do so. Amazing. On to you, Ria. So, like at Hansraj, we have 70 plus societies across the domains like the commerce society, economics, ECA societies as well. I've been a part of Enactus. I'm currently the executive producer at TEDx. I've been a part of CA Foundation, etc. society, and then Matlab, I've been a part of an ECA society too. So in Hansraj, especially, I feel that if you are not a part of the society, you feel a bit left out. So it not only the technical skills, but it actually builds a lot of confidence in you. It feels like you belong in the college. So there have been times like I didn't even come to attend the class, but for a society event. So yeah, the culture is pretty vibrant, but you have to like make your choice very wisely. Societies are everywhere in North Campus. So dividing the time always becomes an issue. But yeah, it's like a really good culture, be it ECA or be it sports or any like academic field you want to, there's like one society for everything. परफेक्ट अमेजिंग सोसाइटी कल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है बट आई थिंक इसमें मेन डिस्टिंक्शन होता है बहुत सारे हर कॉलेज में अच्छी सोसाइटीज होती है बट इफ टू पिक द राइट वन इन एवरी कॉलेज राइट दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल सो नाउ ऑन टू सम स्टार्ट्स राइट थोड़ा आप लोग प्लीज ये बताओ बैच साइज क्या रहता है आप लोग का कौन आप लोग जो स्पेसिफिक कोर्स में उसमें क्या बैच साइज है एंड देन ओवरऑल कौन से कोर्सेज है लाइक सिंस देखिए एसआरसीसी से मैं तो वहां पे क्या रहता है मोस्टली कॉमर्स के बच्चे होते हैं चाहे कॉमर्स यू नो बीकॉम ऑनर्स हो या इको ऑनर्स हो आई एम श्योर हिंदू आंसर्स में ज्यादा वेराइटी रहती है कंसिडरिंग यू नो साइंस और आर्ट्स के दोनों टाइप के भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स सो वुड लव टू नो मोर अबाउट दैट एंड कितना ज्यादा यू नो ये वेरिएबिलिटी आपको हेल्प कर रहा है इस चीज में राइट सो हाउ अबाउट देवेश यू स्टार्ट एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं Sure, sure. So, in terms of eco honors for my course, right now in my batch it's approximately the size of 90 students, and for Bcom honors I think it's more because it has two sections. So it's I would say approximately 150, but I'm not very sure whether I'm right or not. So also in terms of variability, as you said, Hindu is known for pol science and all the other courses that it offers, the humanities courses. So in those aspects, I think it does offer a lot of variability to us. Like we get the exposure whenever we are part of societies and all the other stuff where we get to know each other from different departments. So that is a very good thing, which I compare like to srcc, of course, that we get a lot of exposure to other fields as well, and that is something nice. So yes. Makes sense. Ria, on to you. Yeah, so we have a similar batch size like in Bcom Honors at Hansraj too. We have a batch size of around 90 to 100 people. It's a crowd, but no one ever comes to class. No, not all 100 people come to class ever. So that's not an issue. Uh, Moreover, we have a lot of courses. We have science courses. We have the newly introduced BA program. So you can be pursuing commerce with any other field of interest that you have. We have a lot of sciences courses, arts courses. We have political science, history, everything. But I think when you come to Hansraj, at the end of the day, we are known more for our commerce and economics field than for the science courses. Although we have a really good computer science faculty too. So computer science is one field that is good amongst all the other fields. So it really helps you if you are in a culture that has like a lot of courses that helps you because when the new students are entering college life, one thing about you is that you have to do a bunch of other subjects too, like additional courses. We call them GE, SecVac. So that really helps if you have like other faculty in your college already teaching other courses. So you have a lot of other options to select these additional subjects. इंटरेस्टिंग यार इसमें एक चीज मेरे को और जाना था अबाउट प्लेसमेंट राइट जैसे अब अगेन आई नो स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट सबसे ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है बट उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सो वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि मतलब प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है हिंदू में हंसराज में दोनों में एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहता विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूजुअली हैव अ डाउट कि जो बीए प्रोग्राम हो गए या फिर मान लो कोई आर्ट्स का ऑनर्स हो गया तो डू दे हैव अ यू नो डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स या फिर वो लोग कोर्स को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते बिकॉज कोर्स वर्सेस कॉलेज इज समथिंग दैट इज ऑलवेज लाइक अ टसल गोइंग ऑन है ना एंड देन लोगों को लगता है कि यू नो कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर कॉलेज, बट व्हाट आई हैव नेसेसरीली सीन इज कि कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप नॉर्मल कोर्स भी रखो तब भी चल जाता है। सो वुड लाइक टू नो, सिंस आप लोग के केस में ज्यादा वेरिएबिलिटी है, सो क्या कोई दूसरे कोर्स वाले, फॉर एग्जांपल मैथ्स ऑनर्स हो गया, स्टैट्स ऑनर्स हो गया, या बीए प्रोग्राम हो गया, कैन दोस गाइज गेट द सेम लेवल ऑफ प्लेसमेंट्स एज बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स गाइज? देवेश, हाउ अबाउट यू गेट स्टार्टेड? Sure. So in our college, I think the majority of the students who secure placements are from uh, Bcom Eco starts and sometimes maths. So in terms of that, yes, I would say they stand an equal chance. And as you said about Bcom program and everything, like the first priority of students is to get, like for a commerce background student, is to get these four courses that I mentioned. And yes, it is an advantage at some point because many of the companies that come, they have a criteria of the courses that they're offering their packages or placements to. So in that terms, sometimes those other courses might be neglected, which I'm which I think is a wrong thing, but again, it's how the world works, it's capitalism. So in those terms, I think yes. Yeah, I think that is the answer for that question. मेक सेंस। मतलब बेसिकली ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट प्लेसमेंट्स के लिए अगर आपका सिमिलर नहीं है जिस फील्ड में आपको जाना है, आपका कोर्स बहुत ज्यादा वेरिएबल है, तो फिर डिफरेंस हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज इफ इट्स सिमिलर टू व्हाट यू आर डूइंग, तब फिर भी सेंस बन सकता है, राइट? विच इज व्हाई आई लव टू मूव अहेड विद रिया एज वेल, बिकॉज रिया के केस में क्या है, बीए प्रोग्राम उनका एक कोर्स है जहाँ पे कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स है। सो उसका मैं जरूर जानना चाहूंगा क्या सीन रहता है, बिकॉज देन अगेन इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट द कॉर्पोरेट्स वांट कंसिडरिंग द कॉमर्स बैकग्राउंड इवन इन दैट बीए कोर्स, तो दैट कुड गेट इंटरेस्टिंग। रिया, व्हाट आर योर थॉट्स? Like BA program is a really good combination if you have like commerce economics. It's a really good option for students who have like multiple interests and they want to pursue it further too. But personally, I would say the same that Devesh said, that when it comes to placements, some companies have a fixed criteria. Not even for placements, we have like various corporate competition, like organized by EY, Deloitte has its GSM, and they have a set criteria. So it's mostly BCom honors and Eco honors. So yeah, that is where you end up in a bit of disadvantage, because when the companies come, even for placements, if all the courses are allowed, if you have a BCom honors degree, maybe you are preferred more because they think that you have a higher skill set. Right. Makes sense. Yeah, but you can always go for these BA program courses if you know that you, at the end of the day, the skill set matters. If you know your interest truly lies in those subjects, you can definitely go ahead with it. But yeah, BCom and Eco do have a little bit of advantage when it comes to placements. ठीक है यार, ये तो Yeah, बहुत to ही like बढ़िया हो to गया। हाँ हाँ, यस देवेश, प्लीज yeah, कंटिन्यू। I'd like to add to Ria's points that again, this question, if it is for a general commerce student who's confused about what to do ahead, then yes, course matters. College also matters a lot. But if you're very sure, for example, like I wasn't very sure about economics when I chose it. So if someone who is very sure that he needs to pursue masters in economics, then I don't think his end goal has any relation with the placements. It is just with the course. So course at that point matters for that student. मेक सेंस यार, इस चीज में भाई अगर आपको उसका स्पेसिफिक गोल है। हाँ हाँ, यस रिया, प्लीज कंटिन्यू, फिर कर लेते हैं। हाँ, I actually wanted to go for BMS. Like I was very sure when I was applying. So my first preference was Shahid Sukhdev BMS. But after that, I was like really sure that if not Shahid Sukhdev, I would prefer college over course. Because the thing is, I got in BMS in the first list, I got Shahid Rajguru. That's like an off-campus college. But when I got Hansraj in Bcom Honors, I quickly preferred college over course. Lot of people say not to, but if you have a comparison like Hansraj, so definitely go for the college. If you have a North Campus college, go for college, because the kind of competition that you get here, the kind of exposure, you cannot participate in corporate competitions if you are part of like many other off-campus colleges, because they have a fixed list. So the kind of competition, I never regret choosing college over course. परफेक्ट। आई थिंक इस पे भी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपको, अगर आपने कॉलेज ओवर कोर्स लिया भी है एंड आपको अगर कोई रिलेटिवली लेस फेमस कोर्स मिला है, लेट्स से आपको ऑनर्स नहीं मिल रहा, तो इट्स नॉट दैट कि आपकी लाइफ एंड हो गई है। स्किल्स ऑफ कोर्स मैटर मोर, बट अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट कि थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, एंड वो एक्सेप्टेंस से ही आप आगे जाकर और बेटर कर पाओगे, राइट? सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस।
फाइनली इसके अराउंड अभी रैप अप कर लेते हैं। प्लेसमेंट्स वगैरह का तो बहुत हद तक वही है, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आई थिंक इसमें अल्टीमेटली कंपटीशन पे बहुत ज्यादा सेंस बन जाता है, राइट? सो इस पे मैं बस ये जानना चाहूंगा, लाइक आई आस्क बोथ ऑफ यू, लेट्स से एक पर्सोना क्रिएट करना है, जैसे हम लोग बहुत से केस कॉम्स में करते हैं ना, कंज्यूमर पर्सनालिटी हम लोग बना के क्रिएट करते हैं। सो देवेश, आई लाइक टू आस्क यू कि फॉर समवन हु इज टारगेटिंग लेट्स से हिंदू, हंसराज दोनों, हु इज लाइक द राइट पर्सन जिसके लिए हिंदू इज अ गुड फिट, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली कुछ लोग होते हैं जिन्हें मतलब कंपटीशन कम चाहिए होता है, या फिर कल्चर अलग टाइप का चाहिए होता है। सो अल्टीमेटली वो कॉलेज का कल्चर से बेटर वो लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, राइट? इफ दैट इज द प्रेफरेबल कॉलेज दैट दे शुड गो फॉर। सो व्हाट्स योर टेक, देवेश? आई मीन यू कैन बी जेनेरिक इन दिस केस एज वेल, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें जेनेरिक ही होती है, यू कैंट पॉइंट योर फिंगर एट इट कि व्हाट इज इट अबाउट द कॉलेज दैट इज स्पेशल, राइट? बट एनीथिंग दैट यू फील दे शुड नो एंड दैट वुड हेल्प मेक दिस कॉल। So, yeah, very tough question. I'll try not to give a diplomatic answer on this. So, firstly, I think Hindu is the best college for someone who has he's still not sure about anything, because it offers the best of everything. Like, if you look at academic wise, it has the right amount of academic opportunities if someone wants to go ahead. There have been very great alumni in terms of academics also. In terms of if someone wants to go into the field of drama or any other DCA activities, we have the best societies that comes. Like Ibtada is there, obviously founded by Imtiaz Ali. And again, if someone is looking for placements and everything, the college offers great placements, great companies come here. So it is like the best place to come, and then you can figure out, because along with the corporate side of things, you get the exposure to the ECA side of things. You also get the exposure to the call sign side of things, because many of my friends, they have chosen e-commerce, but but they are opting for UPSC. And that makes sense because Hindu has that environment where a lot of people are going for UPSC. So I would say it is a comprehensive thing of every, like a comprehensive lot. And then anyone who comes here can eventually use all of these experiences to finally decide where they want to go ahead. Perfect, that was I a think really good that answer. sounded diplomatic enough. I tried not to. नहीं नहीं, ये तो दैट वाज एक्चुअली नॉट सो डिप्लोमेटिक, मतलब ये बढ़िया था, एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि इफ यू आर कंफ्यूज कि क्या करना है, देन हिंदू एज अ कॉलेज गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू फिगर थिंग्स आउट। अमेजिंग। ऑन टू यू, रिया, व्हाट इज वन थिंग दैट यू फेल्ट स्पेशल कि यार ये चीज हंसराज का कुछ एक अच्छा हाईलाइट है, दैट इज उनके पर्सनालिटी में आपको हेल्प करेगा? So I think when it comes to Hansraj and Hindu, I've seen most of the people who go for commerce courses somewhere prefer Hansraj, and Hindu is more known for, like he said, pol science, history, other like arts courses. Hansraj predominantly is like commerce and economics honors oriented, but I would say like if you are interested in sports, if you are one person who is just like pursuing a degree for the sake of it, and you are more interested in building a career in sports or ECA or any other like extracurricular fields, Hansraj offers a really good exposure, like really good exposure. So we have like people in sports, we always flex over Shah Rukh Khan, but don't make it a factor, of course. So it's a really good atmosphere to explore things. We have other courses too, but I would again say it's predominantly commerce oriented. So there are other courses that you can explore. There are hundreds of like competitive exams people are preparing for, and there's CAUPSC again. So I think there Hansraj and Hindu land like at a similar place almost. I would again say if I don't know Hindu, but at Hansraj the culture is really inclusive. So if you are someone who's specially able, the placements etc. are somewhere they are a little bit different for you. So I think at Hansraj, that culture is really supportive. We have a cafe that's totally operated by specially able people. So if you think that is a factor for you, so yeah, Hansraj has a really good atmosphere in that respect. Baki, it's always a subjective choice. One thing I've seen many people preferring Hindu over Hansraj just because Hindu mecca organize karate hai. So please don't make it a factor. Okay, if you can go to fest anywhere, you can attend fest anywhere in any DU college once you are part of the circuit. So don't make that a factor. Consider other like practical aspects. But Yes. that is also an important factor when it comes to Right. just kidding. Just kidding.
हाँ नहीं, देवेश हमें एंट्री दिलाएगा, जो भी अगर हिंदू छोड़ के हंसराज जा रहा है उन्हें बस अपना सीयूटी स्कोर बताने, देवेश करने एंट्री दिलाएगा। डन डन। सही है यार, मतलब सब में ही बढ़िया होता है यार। क्रॉसरोड्स भी इस बार हुआ था फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट। तो यार ये मतलब अल्टीमेटली फेस्ट तो आप सबके एंजॉय कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स अगर बड़ा फेस्ट होता है उसको आप ऑर्गेनाइज करने में पार्ट लेते हो तब तो और ज्यादा फन होता है। सो ऑफ कोर्स उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो। दीज कैन बी फैक्टर्स, बट अल्टीमेटली आपको एक कॉलेज का कल्चर देखना है, इफ दैट अलाइंस विद योर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे दैट इज व्हाट वी ट्राइड। आपने इनको देखा, यू नो इन सम लेवल इनके कॉलेज के कल्चर के कारण इन्होंने भी अपना पर्सनैलिटी से बिल्ड करा है। आपको देख के बहुत समझ पाए होगे इनके आंसर से, आपको और बहुत कुछ पता चला होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एटलीस्ट थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिल पाया होगा। एंड देन वंस अगैन थैंक यू सो मच देवेश, रिया, फॉर कमिंग टू दिस वीडियो, एंड आई होप स्टूडेंट्स को इससे बहुत वैल्यू ऐड हो। Before you Sure, end sure. this, just one more thing. Just Yeah. one more thing I'll add. If you're like actually practically talking about placements, just get one thing. At Hansraj, most of the placements are offered for commerce and eco students. Most of the positions offered are finance, consulting, these are research, accounting. That's like most. According to the last year's placement report, only 18% placements are offered for other courses. So if placement is your goal and you are pursuing some other course other than the commerce related subjects, just keep that in mind that most of the placements are commerce oriented in Hansraj. ठीक है, मेक सेंस। चलो बढ़िया, दैट वाज एन एडिशनल इनसाइट्स, Also, आई एम श्योर दैट वुड ऐड one ऑन। last thing we should also talk about is Hindu has the best infrastructure, one of the best infrastructure in the entire Delhi University circuit. या नहीं, उसमें तो पॉइंट ही नहीं, Lunch. सही में लाइक बहुत ही बढ़िया है। हंसराज का वो आई थिंक एलपी बहुत मस्त है, बिन देयर, लाइक बढ़िया था। बट आई फील लाइक हिंदू का, सिंस वी कंडक्टेड अ Y20 सेशन एज वेल, यू नो देवेश माइट रिमेंबर इट, इट वाज क्वाइट फन। मैं देवेश को पूछ रहा हूँ कौन से मतलब ऑडिटोरियम में कराती, इज लाइक कौन सा ऑडिटोरियम, मेरे पास बहुत सारे ऑडिटोरियम है। सो दैट वाज रियली फन। सो बढ़िया है। तो ठीक है, फिर करते हैं इसका। थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर यू नो वील टेक दिस फॉरवर्ड, एंड आई होप स्टूडेंट्स का इससे बहुत वैल्यू ऐड हुआ। देन वही देखते हैं, तुम लोग सब आओ, जब तुम लोग के कॉलेज में वीडियो देख के बहुत आ रहे होंगे तो वो लोग तुम्हें ही बोलेंगे, देवेश भैया आपको देख के किया था यार, या आपका वीडियो देख के हमने फिर फाइनली चूज किया। सो या थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइस, एंड या Sure, एनीथिंग sure, no worries. Do it. Yeah, do hit me up if you come to college after watching this video. राइट। Yeah, even if it's your college, you can hit us up on LinkedIn or Instagram, wherever you find us. परफेक्ट देन गाइस, अगर और भी तुम्हें कुछ डाउट है कमेंट पे डाल दो। अभी तो तुम लोग का एकदम ही वो रिगरस प्रोसेस चल रहा है ये प्रेफरेंसेस का, सो लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग अप इसके अराउंड। सो या वंस अगेन थैंक यू सो मच देवेश एंड रिया फॉर कमिंग अप, टेकिंग अ प्रेशियस टाइम टू डू दिस, एंड या बेस्ट विशेस गाइस, थैंक यू। Yes, यस देवेश। so one last thing, no matter what college you get, no matter wherever you are placed, it is you can grow anywhere wherever you want to. You just need to have the passion to do so. Do not get disheartened whichever college you get. You are the best. Okay. एब्सोल्युटली यार, सही में मतलब अल्टीमेटली कॉलेज आपको बस एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको उस पर फिर फर्दर बिल्ड अपॉन करने के लिए आपका खुद का ही वो चीज है। इसलिए आप देखो ना यार, मैं इसके ना एक मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है, या तो आप अपने कॉलेज के ब्रांड नेम पे पूरे टाइम आप यू नो यू कैन पिगी बैक ऑन दैट कॉलेज ब्रांड नेम, या फिर आप खुद कुछ इतना बड़ा कर लो कि कॉलेज ही आपको इन्वाइट करे एज एन एलुमनाई की, यू नो वैसा कुछ करके। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू द लैटर। सो अल्टीमेटली वही है, कॉलेज इज जस्ट वन फैक्टर, you can obviously try a lot, right? So thank you so much for that, Devesh, like that was an amazing saying. Thank you.